So now it is a time, okay. It is a time to start with the question number 1. अभी आपने सोचा होगा कि सर question number 1 आपने अभी ले रहे हो, ऐसा क्यों है? Because you know that question is having certain adjustment, okay, which you मतलब आपको समझ में नहीं आया होता अगर मैंने पहले ही लिया होता. That's why I took the question number 2 first, then 3. Now it's a time to take question number 1, exercise number 1. Vikram and Pradnya are partners sharing profits and losses in the ratio 2:3. So this is the old ratio which is given to you. Their balance sheet is given to you on March 18. तो आपका balance sheet का date होना चाहिए April 2018. The next day 31 मार्च का date है ना. और ये balance sheet का नाम क्या है? New balance sheet. Now look at the asset side. This is a cash given to you, so cash account is required. They agreed to admit Avani on April 2018 on the terms Avani shall have 1/4 share in future profit. उसका share है 1/4 future profit में. Then shall bring 37,500 as a capital and 30,000 as a goodwill. Shall bring capital and shall bring goodwill. But the goodwill is brought in cash. Now 2 entries of goodwill. Cash account debit to goodwill and then goodwill account debit to capital. Now goodwill will not appear in the balance sheet asset. Then next, building valued at 45,000. Tick mark building. Furniture depreciated by 10%. Tick mark furniture. Provision for bad debts is maintained 5% on debtors. Tick mark debtors. Stock valued at 82,500. Tick mark stock. And very important. Now look at the last statement. अभी तो आपने देखा होगा यहां तक का प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, वैसे ही है, सिंपल है, बट लुक एट द लास्ट वन. Capital account of all partners to be adjusted in their new profit and loss ratio. An excess amount to be transferred to their loan account. Underline the wording, excess amount to be transferred to their loan account. My dear friends, this is very important adjustment in the question number 1. And this is going to be a highlight. मतलब learning point क्या है ये है. Okay. इसके लिए हमको 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा. न्यू रेशियो कैलकुलेट करो, टोटल कैपिटल कैलकुलेट करो और बाद में एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करो हर किसी का. हाउ टू डू इट दैट आई विल शो इन द एंड विद द हेल्प ऑफ वर्किंग नोट. ओके, सो प्रेजेंटली व्हाट टू डू? पोस्टिंग 2 balance brought down, cash in hand, 2 balance brought down, 2 balance brought down. It is 7,500. Then land and building asset side. Land and building asset side inner column 37,500. Plant inner column 45,000. Then thereafter furniture asset में inner column में आएगा 3,000. Then stock 75,000. Debtors inner column. प्लांट के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है आई गेस, तो मैंने प्लांट को इनर कॉलम में लिख दिया. अगर ऐसा हो गया तो क्या करना चाहिए? आपको डायरेक्टली बाहर लिखना चाहिए 45,000 रुपीज. आप इस तरह से कर सकते हो. ओके, मैं तो इसको मिटा दूंगा. चलो, देयर इज नो एडजस्टमेंट फॉर द प्लांट. प्लांट के लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो आउटर कॉलम में चला गया, recorded in the outer column now. Then debtors are recorded in the inner column 87,000. So in this way all the assets are recorded
creditors in the liabilities side, outer column 1,05,000. Capital account of Vikram and Pradnya by balance brought down. It is 75,000 each. There is no general reserve or reserve fund or profit and loss account given to you. तो नहीं दिया है, छोड़ दो उसको. Now proceed with the adjustment number 1. Avni shall have 1/4 share in the future profit. That is already recorded by us. Then she shall bring, not she shall bring 37,500 as capital and 30,000 as goodwill. पहले कैपिटल का एंट्री पास करो. कैपिटल का एंट्री कैसे होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू अवनीज कैपिटल. कैश अकाउंट डेबिट टू अवनीज कैपिटल. To Avani's capital. Avani's capital you write as a buy cash only in the column of Avani. 37,500. So for capital entry is very simple. Cash account debit to Avani's capital and capital account it is buy cash in the column of Avani. Now goodwill brought in cash. It is only given as a brought in cash. Okay. 2 entries are required. पहले आएगा cash account debit to goodwill. Cash account debit to goodwill. तो कैश में आएगा टू गुडविल and second entry goodwill account debit to old partners capital account in the actually sacrifice ratio. But as the new ratio is not given specifically or separately, दिया नहीं है वो. ओके इसलिए आपको सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है. देन ओल्ड रेशियो इज ओनली सैक्रिफाइस रेशियो. ओके what I want to say, please see everybody, please see the question number. अभी आपका बुक ओपन ही है तो एक क्वेश्चन नंबर बताता हूं, वो देखो जरा आप. पेज नंबर 165 क्वेश्चन नंबर 8 उसका थर्ड एडजस्टमेंट देखो. The new profit sharing ratio was 3:2:3. Okay, what I want to say that new ratio should be specifically given like this. अगर इस तरह से दिया है और आपका गुडविल कैश में लाया है, then only calculate sacrifice ratio. Otherwise, old ratio is only sacrifice. Now you must be thinking that sir, we are going to calculate new ratio later on. आपने अभी बोला तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के बाद सैक्रिफाइस रेशियो क्यों नहीं कैलकुलेट करेंगे? करो, वही आएगा, सेम आएगा आंसर 2:3. Then why to waste our efforts? What is the simple logic I'm telling you again, which is very important to understand. When the goodwill is brought in cash, 2 entries are required. Minimum 2 entries. Cash account, debit to goodwill account, to goodwill 30,000. Second entry, goodwill account, debit to capital account. So capital account में आएगा buy goodwill. Okay. Here it should be sacrifice ratio. But when to calculate sacrifice ratio? When the new ratio is specifically, separately given to you, like a question number 8, exercise question number 8. अगर दिया नहीं है तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करके ओके आप सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है. इट इज अ मीनिंगलेस वेस्ट ऑफ एफर्ट्स. ओके मतलब आप वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहोगे, sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio, but the new ratio is not given, then the sacrifice ratio is equal to old ratio. Simple thing.
So we are now going to distribute 30,000 in the ratio 2:3 divided by 5. 5 Okay, size 12, size 3 18. Okay, it is coming 6,000. 6 2s are 12, 6 3s are 18,000. Now, as the goodwill actually having two entries, the goodwill will not appear in the balance sheet. Goodwill आपका balance sheet में आने वाला नहीं है. Like question number 3, now goodwill will not appear in the balance sheet because we have taken two entries. Goodwill account is credited, goodwill is debited, amount is now becoming 0. There is no balance. No balance, it will not appear in the balance sheet. One more thing I want to explain. Everybody please see question number 2. See, comparison is the best way of study. हमने क्या सीखा? अभी क्या सीखने जा रहे हैं? Okay. Because you must compare. पहले क्या था, अब क्या हो गया? Okay. Everybody look at the same page पे देखो, same page पे देखो. नीचे question number 2 में he shall pay 16,000 as a share of goodwill. वहां भी हमने दो एंट्रीज दिया था, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. But there is one more additional statement. 50% of the goodwill shall be withdrawn by all partners. Okay. तो हमने गुडविल का तीसरा एंट्री भी लिया था. That is all partners capital account debit to cash or bank. Okay. But in the question number 1, it is not mentioned that the goodwill is withdrawn. ऐसा दिया नहीं है. It is not at all mentioned that the goodwill is withdrawn. When to take the third entry of the goodwill when it is brought in cash? If it is given in the problem that the goodwill is withdrawn, but 25% withdraw हो सकता है, 50% हो सकता है, या full amount withdraw हो सकता है. हमको क्या करना है? In question number 1, the goodwill is not withdrawn. Not withdrawn. So only two entries of goodwill. Cash account debit to goodwill, cash में आएगा to goodwill, and goodwill account debit to all partners capital. As earlier I told you, sacrifice ratio, लेकिन यहाँ पे sacrifice ratio old ratio ही sacrifice ratio है, because new ratio is not specifically separately given to you. Now look at the third adjustment. Building valued at 45,000 rupees. This is the new value of the building. So building showing the appreciation of 7,500. It's a profit to be recorded, profit and loss adjustment account credited by building. Then furniture depreciated by 10%. फर्नीचर को 10% depreciation charge करो. Now these adjustments are similar to final accounting, which you can complete in with the lightning speed. जो आता है उसको fast cover करना सीखो, fast, एकदम fast. Then RDD 5% on debtors. अब इसका 5% मतलब कितना आने वाला है? 4,350. Okay. Outer column now it is 82,650. RDD less from debtors, profit and loss adjustment account debit to RDD 4,350. Stock valued at 82,500. That is a new value. New value in the outer column. Old value कितना है? 75,000. So there is appreciation, or you can say profit. हाँ, appreciation आप बोल सकते हो, या profit बोल सकते हो on stock. It is a current asset. Here it is buy stock. It's a profit. To the profit and loss adjustment account, losses are debited, profits are credited. That is a simple formula.
And now the discussion of very important point. Your complete concentration is required. Make your eyes up a football size. Okay. And look at the working note and write with me every point, please. Working note. वर्किंग नोट को टाइटल देना है आपको कैपिटल एडजस्टमेंट. कैपिटल एडजस्टमेंट. The step number 1 is a calculation of new ratio. Calculation of a new ratio. How? Okay. Avani is a new partner. Avani's share is 1/4. Okay. Okay. So balance share is 3/4. How? 1 minus 1/4. It is 1 minus 1/4. Okay. ये बड़ा सिंपल है. 1/4 बनेगा. What do you mean by 1/4? 1/4 का मीनिंग क्या होता? 1/4 का मीनिंग होता 1 out of 4. So what is remaining? Is a 3/4. Remaining कितनी है? 3/4 है. 1/4 का मीनिंग होता है out of 4 1. So what is remaining is a 3/4. Now calculation of a new ratio. How? This Chakram, Vikram, then Pradnya and Avni. अभी तीनों का रेशियो हमको कैसे कैलकुलेट करना लेगा? उनका पहले ओल्ड रेशियो ले लो. It is a 2/5, 3/5 multiplied by balance ratio 3/4 and 3/4 से multiply करना है आपको. 3 2s are 6, 5 4s are 20, 3 3 3s are 9 and 5 4s are 20. अवनी का शेयर 1/4 है, लेकिन इसको हमको डिनोमिनेटर मैच करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So you are getting 5/20. So the new ratio is a 6:9:5. ये आ गया न्यू रेशियो. This is step number 1. Now step 2. Total capital on the basis of Avani's capital. Avani's capital. यहाँ पे न्यू रेशियो हमको स्पेसिफिकली सेपरेटली दिया नहीं है, हमको कैलकुलेट करना पड़ा. ओके. अगर आपके अभी भी आपको डाउट है, मतलब सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, अब ये करके देखो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यू आर गेटिंग द आंसर सेम 2:3. एनीवे, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ अवनी's कैपिटल. ऐसा क्यों? अवनी इज अ न्यू पार्टनर. उसका कैपिटल का बेस पकड़ के हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके. For 1/4 share, her capital is 37,500. देखो, उसका कैपिटल कितना है? 37,500. And that is for how much share? 1/4 share. 1/4 के लिए 37,500 है. मैंने क्या लिखा है? For 1/4 share is equal to लिखा है, is equal to, not multiplied by. Okay. Then total capital
must be 37,500 multiplied by 4. I repeat, I repeat, I repeat. What do you mean by 1/4? 1 out of 4. So for 1 out of 4, 37,500. Then what is for all 4? इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई करना है अभी. Okay. So your answer is 1,50,000. This is your total capital. Step number 2. Okay, abhi step number 3. Adjusted capital of all partners. Okay, this 1,50,000 we are going to distribute or divide. Okay, between Vikram, Pradnya, and Avani in the new ratio 6:9:5. हम लोग इस तरह से करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं. Now you understood why I am taking this problem after taking 2 problems, number 2 and 3. ये वर्किंग नोट और आगे भी और है. Now this 1,50,000 divided by 20 multiplied by 6, 9 and 5. Okay. 20 देखो इसका टोटल आएगा 20. 9, 10, 15, 20. मग आपण 20 ने डिवाइड केलं तर किती आलं? Okay. It is coming 7,500. 7,500 multiplied by 6. करून बघा किती किती येतं कॅपिटल. Okay. So multiplied by 7,500 multiplied by 7,500 multiplied by 7,500. इसका तो हमको मालूम ही है ना कितना है. 37,500 है. इसका कितना आएगा देखते हैं और इसका कितना आएगा देखते हैं. Okay. 45,000 रुपीज और इसका आएगा 67,500. Yes. So these are new capital amounts. These are new capital amounts. ये आपका नया कैपिटल अमाउंट आ गया. So if at all capital adjustment is given to you, मतलब ऐसे देना चाहिए तब भी ये करना चाहिए. तो क्या क्या करना चाहिए? स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट न्यू रेशियो. और अगर न्यू रेशियो दिया है तो स्टेप नंबर 1 कट. Then calculate total capital and then calculate new capital amounts or adjusted capital amount for each partner. Each partner. Okay, like this. Anyway, sorry for that. So let us continue. अभी हमने नया कैपिटल तो निकाल दिया सबका, लेकिन लिखना कहाँ पे? What are the effects of the new capital? The effects of the capital are coming. Capital account debits as a 2 balance carried down. 2 balance carried down. 45,000 for this Vikram. 67,500 for this Pradnya. And 37,500 for Avani. And liabilities side में आएगा. It is appearing in the balance sheet liabilities. Capital account of Vikram. Okay. 45,000. Then Pradnya. 67,500. And Avani. 37,500.
इसका टोटल तो हमको मालूम ही है ना, 1,50,000 वहां पे है ना टोटल, वो क्या वही आएगा, सेम टोटल आएगा। Now you must be thinking, okay, everybody look at the problem, मतलब आपने जो अंडरलाइन किया लास्ट लाइन को, excess of the amount to be transferred to their loan account, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपको अभी नहीं, थोड़ा टाइम के बाद पता चलेगा। For that purpose we need to close it down to find out the profit or loss. चलो पहले प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं। So 15,000 minus this. So what is the profit you are getting? 10,350. I'm directly writing now to capital account of this Chakram, Vikram, and this Pradanya. Okay, and it is divided in the ratio 2:3. तो चलो डिवाइड करते हैं, 10,350 divided by 5, okay, multiplied by 2 and 3. 5 से डिवाइड करने के बाद 5 दूनी 10, 3 5 7 35, 2070 multiplied by 2, 4140, and multiplied by 3, 7 3 6210. 2 capital by profit and loss adjustment account. By profit and loss adjustment account. 4,140, 6,210. Yes. Do you remember how we closed the capital account in question number 2 and 3? हमने कैसे close किया था? कैपिटल क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल, अगर डेबिट में कुछ है तो, और बाद में लिखा था टू बैलेंस कैरेट डाउन, लेकिन ये पहले से है टू बैलेंस कैरेट डाउन। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है? ओके, ये अभी सब समझना है, क्योंकि कैपिटल तो ऑलरेडी लायबिलिटीज में चला गया। By the way, these are now new capital amounts of partners. ये कैपिटल उनका न्यू कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल है। ओके, अभी जो डिफरेंस निकलने वाला है, अगर कोई डिफरेंस निकलता है, अभी जो डिफरेंस निकलने वाला है, that difference is to be transferred to partners loan account. It is given to you in the last line where you put the underline also. Everybody please look at अवनी first, जिसका हमने बेस पकड़ा था। अवनी की तरफ देखो। Avni's capital amount is same to the क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड, उसका टोटल सेम आ रहा है। So there is no change. Now everybody look at Vikram. सांगा कुठली टोटल जास्त वाटते तुम्हाला? Please tell me which total for Vikram is more. विक्रम एंड प्रज्ञा दोनों का कौन सा टोटल ज्यादा है? क्रेडिट टोटल ज्यादा लग रहा है या डेबिट टोटल ज्यादा लग रहा है? हेलो, Debit. credit total is more for Vikram and Pradnya. For both of them, credit total is more. करते हैं। $91,140, 99,210। चेक करो। तो 91,140 and 99,210. Yes,
And now your attention required, please. मतलब देखो हमको तो कैपिटल मालूम है ना, अभी जो डिफरेंस आने वाला है. ओके चलो विक्रम के लिए डिफरेंस कितना आता है देखते हैं. आई एम राइटिंग विद द रेड कलर 140. आई एम राइटिंग अबव, ऊपर लिख रहा हूं मैं. $46,140. 46,140. So the differences are 46,140 and 31,710. Okay. Where to record the difference? Where to transfer the difference? That is only given to you that excess of their actual capital over and above adjusted capital is to be transferred to their respective loan account. तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं to loan account, and in the bracket you write balancing figure. Okay. So actually the excess amount is to be transferred to their loan account. Loan account को transfer करना चाहिए. To loan. Yes, now it is very important to understand what is the instruction given. Accordingly you have to do it. अगर उन्होंने बोला है लोन को ट्रांसफर करो तो लोन को ट्रांसफर करना चाहिए. अगर उन्होंने बोला करंट अकाउंट को ट्रांसफर करो, ऐसा भी देते हैं तो करंट अकाउंट को ट्रांसफर करना है आपको. अगर बोला है नहीं नहीं कैश में एडजस्ट करो, then it is coming as a to cash and by capital. Okay. अब यहाँ पे टू लोन will appear directly to balance sheet liabilities. ये लोन जाने वाला है balance sheet liabilities में. Loan account of Vikram and Pradanya. It is 46,140 and 31,710. Take the total in the outer column, please. 77,850. अब मान के चलो डेबिट टोटल अगर ज्यादा होता तो, अब ये क्या हो गया, दिस इज एक्सेस अमाउंट. अगर डेबिट टोटल ज्यादा है तो इट इज अ शॉर्टेज, देन इट इज बाय लोन will appear in the asset side. To loan liabilities, buy loan asset. So capital account is now finished. Now close down your cash account. 75,000 is the total. Okay, cash का total आ गया 75,000 and write in the balance sheet asset में लिखना है आपको cash in hand and now make it tally. Getting dealt by 3,32,850 rupees only. That is the answer.
So, my dear friends, you might have understood the gravity of the exercise question number 1. मतलब क्या था उसमें इतना? Okay, highlights are again. अगर आपको चाहिए ये लेक्चर आप वापस एक बार देख भी सकते हो. I'm going to upload the same in the app. Okay, friends.